today everybody knows, or every state in the world talks of environment, protection of environment. That has become a state policy as well as part of the Indian foreign policy or foreign policy of any nation or each and every nation. So that is very important. Okay. Second is the latest development in international politics today. Yesterday there was a talk between Vladimir Putin and Donald Trump to prevent the Russo-Ukrainian war. Do you know what was the talk? What was the topic of discussion? What was the point of agreement? Trump requested for a 30-day ceasefire. Putin did not agree, but both the countries agreed not to attack the energy infrastructure or energy plants, power plants in Ukraine. And Putin agreed to that. Why there is a talk of environment, that is energy structure or power plant, in a discussion between Russia and America? So that is also part of environment. So every war destroys environment. Normally, what happens? When you talk of international politics or international relations, we talk of war and peace, we talk of collective security, national interest, hegemony. So there is no question of environment earlier in international relations. Environment did not have a place in international relations earlier. But in recent times, particularly after globalization, it is. There is an agenda of environmental protection in global politics, though it was earlier with the United Nations and other international agreements. Another recent example of environment in international politics, you must be knowing when Trump came on the very first day of his office. On the very first day of his office, he withdrew from Paris Climate Agreement. What is Paris Climate Agreement? Can you tell me? What is Paris Climate Agreement? Paris Jalavayu Chukti Kon? Paris Jalavayu Chukti Kon? Tell me. सर ये पेरिस रो गोटे एग्रीमेंट होता 2015 रे जोटा कि वर्ल्ड ग्लोबल टेम्परेचर को डाउन करिया पाई डाउन करिया पे न बढ़े न दवा पे 2 डिग्री भीतर रखिया तापरे थिपाई माने सब देश कंट्रीब्यूशन करिवे आ जोत पाई जते सब माने जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट अछि से सब इतरे फुलफिल हे परिबो माने जे कमिते कि टेम्परेचर राइज न होबो ग्लोबल ले सेति पाई सर से विड्रॉ करिया लागे ट्रम्प why did Trump withdraw from this Paris climate agreement where America was a signatory? America raji hitra chukti hitra. So there was a slogan which was discussed in the first class, drill baby drill. तार तो खोली चला पेट्रोल खोली चला एक था स्लोगन दिला किए ट्रम्प. So that goes against the protection of climate agreement that is in Paris. So Paris climate agreement restrict nations, sovereign states, not to misuse environment. परिवेश को ध्वंस न करिया पई अपव्यवहार न करिया पई राष्ट्र मान को नियंत्रित कराई जी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट रे एवं जो क्लाइमेट एक्शन ता पई समस्त पैसा देबे
तो ट्रम्प आ पैसा खर्च करने राजी नहीं से विड्रॉ करेगा. So giving two examples, I used to point out that environment issues have become prominent in international politics today. Why? Earlier it was not there, now it is there. Why? Because now we talk of sustainable development. ओडिया में कहते निरंतर विकास. There is a definition of sustainable development by Brundtland Commission. So what did it say, that commission? That development that meets the needs of the present. Sustainable development or definition है development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet theirs. एपरी एक विकास जहाद्वारा वर्तमान वंशधर आवश्यकता पूरण होगा सहित भविष्यत वंशधर आवश्यकता को आखि आगे रखा केमिति सुरक्षित रखा से आवश्यकता पूरण कर अर्थ प्राकृतिक संबल जोटा एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, पेट्रोल हो, डीजेल हो, कोयला हो, एनी नेचुरल रिसोर्सेस आर एक्जिस्टिबल सरी जीव दैट आर नॉट अनलिमिटेड से असीम नुहे. तो ताकू आम एपरी एक भाव में व्यवहार करवा आमर आवश्यकता पूरण होगा सहित भविष्यत वंशधर आवश्यकता पूरण करने सुरक्षित गच्छित रखा. दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये कॉन्सेप्ट केतेबेले आसिला? व्हेन nations all over the world, people all over the world and various movements realized that the war among nations and the particular western led capitalist development in the world have led to the destruction of environment, climate change, global temperature, which is threatening the very existence of not only human civilization but also the entire living planet in the world. पृथ्वी रे वर्तमान आमे जो बसवास करूछु, we are living planet. आमे केवल मनुष्य नुहे, पशु पक्षी गछ वृक्ष जहाँ बंची माने सजीव जोटा बंची आमे जो विकास करूछु से विकास फल रे परिवेश एपरी ध्वंस हो जाइछि जे आउ ए माने बंचिबे कि नै से प्रश्न उठला. So there is a big question now all over the world in United Nations and among nations that we need urgent action. As you know, there are Sustainable Development Goals, SDG 21. So निरंतर विकास लक्ष्य यार अर्थ विकासटा एपरी हवा उचित जोटा निरंतर चलिबो, सबुदिन चलिबो. आमे तो एक्सेस यूज करवा पेट्रोल डीजेल पॉल्यूट करवा एयर को वाटर को लैंड को मिसयूज करवा ताहले भविष्यत वंशधर पई आमे कोनोसी जिंस रखि परबा. So this is the background in which environment became a major issue in interstate relations, in global politics, in global institutions, in global commerce, in global trade. So that has now become a hot issue because of the degradation of environment, challenging the very life of man and other animals, other plants in the world. एमिति अवस्था है जे जलवायु परिवर्तन फल ग्लोबल टेम्परेचर वृद्धि विश्व तापमान वृद्धि फल आमे प्राणी भाव में जीवंत प्राणी भाव में बचे कि नहीं ये जना माने डाउटफुल है. सो देयर आर वेरियस डॉक्यूमेंट्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, कॉन्फ्रेंस, समिट्स, एग्रीमेंट्स रिगार्डिंग दिस. So what the Western concept of development was telling us, हमको पाश्चात्य विकास धारा जहाँ कहला जे we need industrialization, we need more and more production, we need more and more production of coal and other natural resources, oil, gas, petrol, diesel, etc. Now we are saying and we are feeling that this is wrong, because if you go on overusing, misusing the natural resources, that may destroy the earth on the world, a living earth on the world. अर्थ जीवंत पृथ्वी जोटा सेटा आगामी दिन में आम यदि यही भाव में प्राकृतिक संबल अपव्यवहार करवा, बहुल व्यवहार करवा से ध्वंस हो.
So that's why earlier international relations was confined to diplomatic relations, war and peace, commercial, political, diplomatic, economic relationship between nations or among nations. There is no scope for environment issues to be the agenda of the global politics. ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଆମର କ'ଣ ହଉଥିଲା? ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତି, ଚୁକ୍ତି, କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ, ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏଠି ପରିବେଶ କଥା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଗ୍ନାଲ ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ ପରିବେଶ କଥା ଆସିଲା। So we need the traditional approaches, realism, new realism, liberalism, neoliberalism, structuralism, post-structuralism, modernism, post-modernism, Marxism, all these feminism, all these approaches to international politics or relations did not have a space, did not have so much agenda on environment issues in international politics. So there was a need of an approach which focuses on environment at the global politics level, political level or global international relations level. ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ କଥାଟା ଆସିବାର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, because this is the life and death question of the entire mankind. This questions the very existence of living animals or men or women or plants on the earth. ପୃଥିବୀରେ ଜୀବ ଜଗତ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଜୀବ ଜଗତ ବଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠଉଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କଲା କୋଉଟା? ମେନଲି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଆପ୍ରୋଚ ବା ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। କାହା ପ୍ରତି? ନା ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ବା ବିଶ୍ୱ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି। ସୋ ଗୋଟେ ମିଥ୍ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। What is development? We have already studied development of underdevelopment, development of underdevelopment. की प्रकार डेवलपमेंट ଗୋଟେ ବିକୃତ ବିକାଶ ହେଇଛି ପୃଥିବୀରେ। The entire western world is highly developed. At the same time, it has decisively destroyed the environment. ପୃଥିବୀରେ ଉନ୍ନତ ଦେଶ ମାନେ ଆମେରିକା, ଜର୍ମାନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, all these developed western capitalist nations have destroyed, damaged the world environment. ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶକୁ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। They drilled more, they produced more, they consumed more. ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉପଭୋଗ କଲେ, ଉପଭୋକ୍ତା ହେଲେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ କଲେ। Whereas the third world or the poor developing nations in Latin America, Asia and Africa have become dumping yard of poor people. ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଟା ଡମ୍ପିଂ ଆଡ୍ ହେଇଛି। ସେଠି ସବୁ ଗରିବ ଲୋକ ସେଇଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଫିଲ୍ଡି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। So these are the issues that emerged in the development process. And the myth of development led by these Western capitalist nations and particularly neoliberal globalization was challenged by this environmental approach. ये जो myth प्रचार हला बा मिथ्या प्रचार कल्पना जल्पना हला जे पाश्चात्य देशर जो उन्नति आसीची विकास ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା। So India, China, Africa and other countries caught up, catch up, they run after their model. ସେମାନେ ଯେମିତି ବିକାଶ କଲେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ବିକାଶ କଲେ। ଶିଳ୍ପ ତିଆରି କଲେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି ହେଲା, ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ନଥିଲେ। ଆମେ ଅନରିଲେଣ୍ଟଲି ବିନା ବାଧାରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ। So if you come to question of war, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କଥାକୁ ଆସିବା, you see major portions of land, air and sea are blocked by military forces, not for common people purposes. ସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଜଳପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିଛୁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆକୁ ବ୍ଲକେଡ୍ କରି ରଖିଛୁ, ବ୍ଲକ୍ କରି ରଖିଛୁ, ଆକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ କରି ରଖିଛୁ। ସେଥିରେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ କିଛି ହଉନି, ଉତ୍ପାଦନ କିଛି ହଉନି, ଖାଲି ମିଲିଟାରୀ ପର୍ପସରେ ତ ବ୍ଲକ୍ ହେଇକି ଅଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଇନ୍ ଏ ୱାର୍
whether it is Palestine or in Ukraine, the entire environment is destroyed. Paribesh dhwangsa. When you use sails, bombs, drones, missiles, that destroys the air and water quality. ସେଠି ପାଣିର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଏବଂ ପାଣିର ଗୁଣ, ପାଣିର କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ଏୟାରର କ୍ୱାଲିଟି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କମନ ଲୋକ ସେଠି ସଫର ହୁଅନ୍ତି ୱାରରେ। And interestingly, the money you spend on defense purposes, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଉ ପଇସା ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ଇଣ୍ଡିଆ କରୁ, ଚାଇନା କରୁ, ଆମେରିକା କରୁ, ଯିଏ ବି କରୁ, ସେଥିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରୁ ମଣିଷର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଉଟା ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ପାଣି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଫୁଡ, ଇଏ ସବୁକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ଆମେ ସେଥିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ। So these questions came up. What kind of development? It is qualitative development or quantitative development? So we did not have a paradigm, methodology or index or ମାପଦଣ୍ଡ, ମାନଦଣ୍ଡ to judge how environment was destroyed and what kind of development is there. କି ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ହେଲା? So if you have more industries, more roads, more buildings, more space technology, more missile, more nuclear weapons, then you are a developed nation. This is a traditional approach towards development that destroys environment. ଆମେ ବିକାଶର ଅର୍ଥ କଥା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବୁଝୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେତେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି ହେବ, ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି ହେବ, ଯେତେ ଶିଳ୍ପ ତିଆରି ହେବ, ସେଗୁଡ଼ା ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଯେତେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ତିଆରି ହେବ, ଯେତେ ବନ୍ଦର ତିଆରି ହେବ, but we did not count, we did not have any method to measure how much environment has been destroyed. ଏଇ ଯୋଉ ବିକାଶର ଧାରାରେ କେତେ ପରିମାଣର ପରିବେଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। That is the most important thing. So now there is a worldwide movement, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଯେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପରିବେଶ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି, ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ, ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଭରଣା କରିବା ଦରକାର। So that's why America withdrew when Trump came to power for the second term. Now China is saying, no, we need industrialization. India is saying we need industrialization. So here there is a relevance of Gandhi. ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବଢିଗଲା ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, କାଟି ପିନ୍ଧ, କୁଟି ଖାଅ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କର, ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। That has become the mantra in today's policy. So what is development policy? Development policy ରେ ଯୋଉଟା ଆସିଲା, କଣ ଆସିଲା ଏଥିରେ ଯେ destructive to nature. We brought a development that was destructive to nature. Land was degraded, ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମିଗଲା, ଭୂମିର ଗୁଣ କମିଗଲା, ମାନ କମିଗଲା, ଡିଗ୍ରେଡେସନ ହେଇଗଲା। Rivers were polluted, all waterways are polluted in the world, almost major waterways. ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଦୂଷିତ, ଯମୁନା ପ୍ରଦୂଷିତ, ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷିତ। ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱେଷ୍ଟ, ଶିଳ୍ପର ଯୋଉ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ, ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିବ ଡିବେଟ୍ ହେଲା, ସେ ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଯମୁନା ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇଲା ଏବଂ କେଜରିୱାଲ କହିଲା ଯେ ପାଣି ପିଇ ହବ ନାହିଁ। So there was a debate in the electoral debate in politics regarding the quality of water of Jamuna. So what does it signify? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟେଜକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ପରିବେଶକୁ, ଏବଂ ପାଣି ଯେହେତୁ ୱାଟର ଇଜ ଲାଇଫ, ଜୀବନ ହିଁ, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ତାର ଗୁଣ କେମିତି ଖରାପ ହଉଛି ଶିଳ୍ପାୟନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। So world over ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆଉ କଣ ହଉଛି? ଗୋଟେ ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ହେଲା ୱାଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଟମସ୍ଫିୟର, ପରିବେଶ ଯୋଉଟା ଆକାଶ, ସେଟା କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ CFC ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ଯୋଉଥିରେ ଓଜନରେ କଣା ହେଇଗଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ତାପମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଏବଂ ବରଫ ଯୋଉଟା ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଅଛି, ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ୱିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। As you know, this is the global warming. So what kind of development this is? Now you are demanding, we need a free movement of capital. ପୁଞ୍ଜିର ଆମେ ମୁକ୍ତ ଅବାଧ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଜଗତୀକରଣ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଚାହୁଁଛୁ, ଅଧିକ ଶିଳ୍ପ ଚାହୁଁଛୁ। So what does this mean? This means that they are destroying the world environment process
विश्व परिवेश प्रक्रिया को एटा ध्वंस करुछि। तेणु पृथ्वीर जंगल जमी जल मृत्तिका समुद्र परिवेश एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, पूरा ध्वंस होगी अवस्था चली। तो देयर इज ए न्यू अप्रोच। सेकेंड आसला कौन, ये जो मिलिटरी स्ट्रेंथ आमर सामरिक शक्ति दरकार। वी आर क्रिएटिंग न्यू मिसाइल्स, वी आर एक्सप्लोडिंग न्यू बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, वी आर क्रिएटिंग न्यू वेपन्स, वी आर बाइंग न्यू वेपन्स। आम नुआ नुआ अस्त्र किणुचंती, तैयारी करूचंती, बोमा तैयारी करूचंती, आम तो कहूँ आम मिलिटरी शक्तिशाली होचु। किंतु परिवेश दृष्टि तार कौन फलाफल, जस्ट सम डाटा जे लैंड फॉरेस्ट वाटर वेज तो मिलिटरी ब्लॉक कर रखी अंचल जो उत्पादन हो पारता, घर ही लोक रही पारते, से बड़ बड़ जहाज अच्छी, क्षेपणास्त्र घाटी होगी तैयारी अच्छी एवं अलग अस्त्र शस्त्र ठूल होगी अच्छी। यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो 6% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल कंजप्शन। पृथ्वी रे जते तैल व्यवहार होउछ, तैल माने जो डीजल पेट्रोल, तार 6 भाग मिलिटरी पे व्यवहार होउछ। तर बर्तमान जो बमिंग कला इजराइल काली एयर स्ट्राइक तो प्लेन उड़ी थो, एतर तो पेट्रोल जो एयर रे तेल खर्च होइतो ना। रूस यूक्रेन युद्ध रे रूस जो मिसाइल माड़ कला तेल खर्च होइछ ना, शून्य तो आसुनी। तार था 6% ऑयल मिलिटरी पर्पस रे खर्च होइछ। एवं इंटरेस्टिंगली तृतीय विश्व गरीब राष्ट्र माने whatever the oil they use, oil means I mean petrol and diesel, they use, that is the 50% of their use, that is 6%, that is the 50% of their use। तार तो जेतिकी तैल व्यवहार कर गरीब विकासशील राष्ट्र माने तार अधा हूँ मिलिटरी यूज उन्नत राष्ट्र माने कर समस्ते कर। सो व्हाट डज इट मीन? द मोर यू प्रोड्यूस वेपन्स, the more you use weapons, the more you involve in war, the more you destroy the nature, the more you overuse the natural resources। Okay, पृथ्वीर समस्त प्राकृतिक संबल युद्ध जो व्यवहार कर परिवेश केवल ध्वंस हो नहीं, भविष्यत वंशधर गच्छित थिबा प्राकृतिक संबल को आमे ताकू ध्वंस कर दो, नष्ट कर दो। किछ दिन पर पेट्रोल डीजल मिलबा। Okay, so this is a dangerous strain। So we don't have any agenda or a design to protect our environment in global politics. Now this has come up. So we are talking of balance of power, peaceful existence, deterrence, cold war, collective security, negotiation in world politics. We never talked earlier about protection of environment, air, land, water, pollution, global warming. So in the last 20-30 years, these have come to occupy the global agenda. And in this background, the environmental approach to international politics emerged। ये जो आवश्यकता रू पुराना जो पारंपरिक दृष्टिभंगी गुड़िक जो गुड़ा कहली, रियलिज्म हो, लिबरालिज्म हो, फेमिनिज्म हो, मार्क्सिज्म, ये समस्ते these questions of environment were not taken up by these approaches। ये दृष्टिभंगी गुड़िक परिवेश कथा को उठो, बर्तमान परिवेश दृष्टिभंगी आसीगला। The 3 myths were destroyed by this environmental approach। ये जो परिवेश दृष्टिभंगी आसीला, तीनोटी जो मिथ्या प्रचार, काल्पनिक प्रचार बा मिथ थिला, ताकू ये प्रथमे आक्रमण कला बा चैलेंज कला, आह्वान देला। गोटा हैला कोन, इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेशंस प्रोग्रेस। गोटे मिथ हैला जे नेशंस प्रोग्रेस इज डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। नो, गोटे देशर प्रगति बा अग्रगति अर्थनैतिक अभिवृद्धि हेले हबो। दिस वाज चैलेंज्ड बाय एनवायरमेंटल अप्रोच। If you are making progress economically and destroying nature or environment, then that is not real progress। तमे अर्थनैतिक भाव में प्रगतिशील होउछ, करूछ, शिल्प कल कारखाना, रास्ता घाट, विमान बंदर, रेल बंदर इत्यादि बढ़ी चली बहुत संख्या, किंतु अन्य पक्षरे परिवेश ध्वंस होउछ। अमेजन जंगल ध्वंस होउछ। आमर जो ओडिशार लाइफ लाइन एंटायर ईस्टर्न पार्ट रो बारिपदारे वो जंगल
हाँ मयूरभंज रे को जंगल अच्छी मयूरभंज केउंझर से पार्ट मिसे बेंगल एटा फेमस टूरिस्ट स्पॉट जान ना कैन एनीबडी टेल Similipal. Similipal. Similpal. जी So Similpal is the lifeline. That is the lungs of ताको फुसफुस कौन अमेजन जंगल को पृथ्वी फुसफुस कह जाए लंग्स कह जाए कारण जिते अंगारकाम्ल गैस एब्जॉर्ब कर सिमिलपाल जिते अंगारकाम्ल ग्लास गैस जाऊ तैयारी होउची ताको एब्जॉर्ब कर घंच जंगल अप टू केउंझर सेपटे सिमिलपाल लंबा रेंज अच्छी सेपटे से जंगल अच्छी सो फॉरेस्ट वी नीड किंतु तुम यदि विकास ना जंगल काट गछ काट कह आम विकास है नुआ रास्ता तैयारी कलु 4 लेन 6 लेन 8 लेन रास्ता आम तैयारी कलु बड़ इंडस्ट्री कलु so that is not development. So the myth was challenged by the environmental approach that economic progress is dependent on industrial development or economic growth. Second myth कौन globalization restricts economic poverty or spread of poverty or market strategy or free market that is globalization or LPG liberalization privatization globalization controls poverty restricts poverty or eradicates poverty जगतीकरण प्रक्रिया द्वारा दारिद्र्य दूर हुए ये गोटे भूल मिथ्या कथा 30 वर्षर जगतीकरण फल देयर इज ह्यूज ब्रुटल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड टुडे आफ्टर 30 इयर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन 30 वर्षर जगतीकरण पर आम गोटे टर्म यूज कर ब्रुटल इनइक्वालिटी अत्याचारी असमानता हाउ 1% of people in the world now own more than 90% of the resources of the world. पृथ्वी ग्रह 1% एक भाग लोक पृथ्वी जिते संबल अच्छी तार 90 भाग मालिक एवं 90 भाग लोक 99 भाग लोक मात्र 10 भाग मालिक सेम इज इन इंडिया we are happy when the Forbes magazine publishes the photo of millionaires billionaires trillions of India getting published in the front page of Forbes magazine फॉर्म मैगजीन प्रच्छद पटरे जड़े भारतीय अरबपति खरबपति हो गले आम खुशी नो दैट इज नॉट इक्वालिटी दैट इज पॉवर्टी दैट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भारत में अल्प कई जन लोक 70 भाग संबल मालिक भारत में जिते संबल अच्छी जिते धन अच्छी जिते संपत्ति अच्छी तार 70% ओनरशिप एवं आउ 30% लोक 70% लोक 30% संबल मालिक दिस इज ब्रुटल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया इनिशिएटेड और एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और ग्लोबलाइजेशन इन द 90s 90 दशक 1991 आम जगतीकरण प्रक्रिया ग्रहण कल 91 रु आज है 35 इयर्स 3 डिकेड्स मोर देन 3 डिकेड्स 3 डिकेड्स रे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ी तो पॉवर्टी कमी जीव जो धारणा बढ़ ना जो धारणा दैट इज रॉन्ग एक एनवायरमेंटल अप्रोच कहला थर्ड कौन कहला वेल्थ कैन बी क्रिएटेड थ्रू डेप्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पुट ऑल द थर्ड वर्ल्ड नेशंस इनटू ए डेप्ट ट्रैप आंतर्जातिक मुद्रा पांठी एवं वर्ल्ड बैंक विश्वर गरीब राष्ट्र मान डेप्ट ट्रैप रे पकईदेला ऋण जनतार पकईदेला और कहला ऋण करके तुम संबल तैयारी कर दिस इज ए मिथ ऑफ world global capitalism, neoliberal globalization that was challenged by the environmental approach. So environmental approach was emerging in the first years of globalization. Now it has become a major approach in international politics, which forced the nations to consider the factor of environmental protection, global warming, climate change in international politics. ये बाध्य कला राष्ट्र मानकू आंतर्जातिक राजनीति रे परिवेश गोटे प्रमुख मुद्दा परिवेश गोटे प्रमुख समस्या यू हैव टू एड्रेस दैट सो यू हैव क्योटो प्रोटोकॉल यू हैव पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट यू हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दैट इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सो एवरी नेशन इज टॉकिंग ऑफ एनवायरनमेंट ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग तो वर्तमान सबू राष्ट्र आलोचना करुचंती जे जलवायु परिवर्तन बंद करहब केमती विश्व तापमान वृद्धि के अटके हब केमिति एवं मनुष्य समाज बचियो केमिति सो दिस इज द डिबेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट
So the wrong notion that development will protect the environment was exposed by the environmental approach. So 70s re severe oil crisis hegala, serious crisis Mexico re hela सबुआड़े hela, food crisis hegala. तो 90s रे 80s रे 80 दशक रे डेवलपमेंट डिकेड घोषणा कला किए जाति संघ से गुड़ाए कॉन्फ्रेंस हला बही रही खाली पढ़ी दूचे गोटा तुम जान गोटे हेलो हाँ से उर्दू हाँ घर पाखे पलैस 7:15 7 क्लास सर हेलो So, World Food Conference was held in 1974 in Rome. Why did it happen or why did it was organized? कहीं की विश्व खाद्य सम्मेलनी संगठित हला 1974 में सर what are the reason of holding conference on food program in 1974 in Rome? Because the world was facing the crisis of food that has to be addressed. Okay. Second is World Climate Conference 1979 in Geneva. World Climate Conference was held and all the major nations joined there to talk about, to discuss about, to have a policy on climate change. Climate is not performing well, is not in a regular mode, regular pattern. There are some changes and the factors that led to changes that has to be addressed by the nations. It a global politics agenda asiya. Food agenda asiya, climate agenda asiya. Alternative lifestyle and development option United Nations program re Nairobi re it hela tapre World Commission on Environment Development Commission hela sedra kala our common future, air, water, land, atmosphere, these are common future we have to protect. America बेसी परमाणु अस्त्र, रशिया बेसी परमाणु अस्त्र तैयारी कर दे ध्वंस करी कहबो I am powerful तमरो नाही you are not powerful. No, that cannot be. So that means the entire world has to address the problem of development as well as the environment. Then Rio conference, Rio de Janeiro, that is the famous conference known as Environment Conference, Rio de Janeiro Conference, Environment and Development 92. World Conference of Human Rights, human rights dimension change. We have a right to development, we have a right to environment, we have a right to non-polluted air, non-polluted water. प्रत्येक मनुष्यर स्वच्छ पानी, स्वच्छ पवन, स्वच्छ परिवेश अधिकार अच्छे. तो कल कारखाना माने नदी गुड़ा को ध्वंस करदे, नदी गुड़ा को सुखे देवे. We have a debate on Mahanadi water between Chhattisgarh and Odisha. You know. So for industrial purposes, Chhattisgarh is allowing companies, big factories, to take water from Mahanadi. छत्तीसगढ़ सरकार शिल्प बड़ बड़ कल कारखाना पानी नापी एलाउ कले महानदी से बड़ बड़ कूओ खोल बसई ड्रेन कर गले पानी सुखी गले आम ओडिशा पानी मिलला नहीं. सो यू डोंट हैव दैट, वी हैव ए राइट. प्रत्येक लोकर अधिकार अच्छे. तो एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स आर कनेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दैट समिट. देन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट कोपेनहेगन. देन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन इन बेजिंग. then habitat 2 बासस्थली जोटा द्वितीय बेसस्थली सेटलमेंट इस्तानबुल हेला. वर्ल्ड फूड समिट रोम 96 रे हेला. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस दी थर हेला सिएटल रे 99 रे एवं 2001 रे जेनेवा रे. देन फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस एकता 2002 रे. सो दीज आर दी इश्यूज दैट वाज डेवलप्ड बाय एनवायरमेंटल अप्रोच. वी यूज द टर्म इकोलॉजी. व्हाट इज इकोलॉजी? परिवेश जोटा में कहू. So, there was the common agreement throughout the world, in the United Nations, outside the United Nations, and among the nations, that all resources of the world are exhaustive. पृथ्वीर समस्त संबल पानी हो, पवन हो, बा तेल हो, बा कोयला हो, बा सोना हो, बा क्रोमाइट मैंगानीज जहाँ भी हो, सबू संबल गुड़िक असरंती भंडार नुहे, सरीजीव, exhaustive. And they cannot be overused, misused and destroyed. ताकू अपव्यवहार करा जाई परिबो नाही, बहुल व्यवहार करा जाई परिबो नाही एवं ध्वंस करा जाई परिबो नाही. गोटे सरकार को द्वारा गवर्नमेंट्स आर कस्टोडियंस ओनली, they are not owners of the natural resources.
States are not owners. It is the mankind who owns them. ये सब स्तर मालिक होची मनुष्य समाज. सरकार माने केवल कस्टोडियन जगिया पे अछ. से तो ध्वंस करि परिबे नाही. एई कांसेप्टटा जो इकोलॉजिकल अप्रोच रु जन्म हला. तो सेथरे कोन आसिला जे ए जो रिसोर्सेस संबळ ताकू केमिति बंचा जाई पारे. तो सब्सटेंशियल डेवलपमेंट सही कांसेप्ट रु आसिला जे ब्रुंडट लैंड जे नेदरलैंड रो थिले नॉर्वे रो प्रेसिडेंट तांको नार ब्रुंडट लैंड कमिशन हला से डिफाइन करे जो कथा कहली जे सब्सटेंशियल डेवलपमेंट मीनिंग हला टू कीप रिसोर्सेस फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. आमे एमिति विकास करिवा हमर आवश्यकता को पूर्ण करिया सहित प्राकृतिक संबळ को भविष्यत वंशधर पई रक्षा करा जिवो. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ सब्सटेंशियल डेवलपमेंट बा सब्सटेंशियल डेवलपमेंट रे एटा हो जे पैराडॉक्स. ताको गला पॉवर्टी वाज द ग्रेटेस्ट पोल्यूटर. पॉवर्टी जेतु अछि एथि पय मध परिवेश प्रदूषित अछि. नेक्स्ट गोटे कांसेप्ट आसिला ये तो बुझेला मुझे बुझुची जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस डेवलपमेंट वर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी. सो दैट इज अ मिथ. जीडीपी बढ़ी गले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ी गले बा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ी गले जीडीपी रो एथिक अंश एथि पय खर्च कर देले विकास हे गला. दैट इज नो. सो नाउ देयर इज अ रीडेफिनेशन of development. Development was redefined by this question of concept of theory of sustainable development. निरंतर विकास संज्ञा द्वारा विकास सर संज्ञार पुनर्निर्धारण है. एवटू एनवायरनमेंट अप्रोच रो जन्म है. विकास कर किंतु परिवेश को ध्वंस करी विकास करिवार अर्थहीन बा तार किछि माने माने ना. तापर आउ किछि लोक ग्लोबल कंजप्शन पैटर्न ब्रुंडट लैंड कमिशन तो आरंभ करी अन्य माने दे क्वेश्चन ग्लोबल कंजप्शन पैटर्न. यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो अमेरिकन पीपल यूज डबली द पेट्रोल डीजल एंड वाटर. पृथ्वी अन्य देशर नागरिक मान अपेक्षा अमेरिकन माने डबल पेट्रोल यूज करछंती कार यूज करछंती पानी यूज करछंती. दे आर ओवर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस. सो देयर इज अ नीड ऑफ ग्लोबल कंजप्शन पैटर्न थ्रूआउट द वर्ल्ड. We need to, those who are rich people, they have 10 cars. You need to develop a public transport system. If you have money, that does not mean you will have 10 cars. You have a car, your wife has a car, your children has a car, your grandparents have a car. So how much petrol and diesel they are using or misusing? That is leading to environment pollution. So consumption pattern, you are misusing water. You have, if you have money, you have 4 houses, buildings, and you are using or misusing water, gas. That is overusing. अधिक व्यवहार कर जाए आवश्यकता रो अधिक व्यवहार करा जाए तो तमर टंका अछि अर्थ नुहे you will overuse that. So they are developed this model in the Rio summit. What is the demand for the global community? विश्व संप्रदाय पई राष्ट्र मानक पई कोन आह्वान आसिला से कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. जिते डाइवर्सिटी विभिन्नता अछि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जीव विज्ञान रे बा जैविक विविधता अछि ताकू सुरक्षा करा जाय. बायोलॉजिकल रिसोर्सेस जा जैविक संबळ अछि तार सद्व्यवहार सस्टेनेबल यूज निरंतर व्यवहार. फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेस. तो फेयरली यूज समान भाव रे यूज. So now we'll see globalization has damaged environment. जगतीकरण रे आमे environment को damage कर दी. Energy over produce करचंती, over use करचंती. So called developed nations. What do we need? We need a global action. Climate change is a global problem. You need to global action. India will do for climate change. China will do. China and India will do. America will not do. This cannot happen. You need global action program. You need global arrangements. You need global institutions. You need global law because environment is a global problem. ये concept आसिला जे परिवेश एक विश्व समस्या बा विश्वव्यापी समस्या तापाई विश्वव्यापी कार्यक्रम दरकार. भारत वर्ष रे गछ लगे देले नेता माने सब देखियो बा वैज्ञानिक माने जे जो मीटिंग रहउची गछ आजिकल दोछ एडी केडी गछ लगे देले परिवेश सुरक्षा. तुम हजार हजार लक्ष गछ काटी दबो परिवेश ध्वंस कर दो जंगल टाक काटिबो
किंतु मीटिंग रे गोटे छोटिया गछ कहबो होम प्लांट ऑक्सीजन घर भीतर हो बाहर तो ऑक्सीजन नथिबो आ घर भीतर छोटिया गछ रे ऑक्सीजन आसीबो तो दिस इज ए मिथ सेतपे को गला ग्लोबल एक्शन हबो ए ग्लोबल एक्शन तला इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बा एनवायरमेंटल अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ओके so this is all about international environmental politics or environmental approach so what are the major outlines what I taught today ये जो चैप्टर रे मु पढ़ेली परिवेश दृष्टिभंगी विश्व राजनीति प्रति आंतर्जातिक संपर्क प्रति कौन यार हाइलाइट्स कौन फर्स्ट थिंग ऑल द ट्रेडिशनल एटा को रिकैप कर दो लिखि पार मन रखि पार ब्रीफ जहाँ पढ़ेली तो ब्रीफ रे आउथरे समराइज कर दूची the earlier traditional approaches liberalism or realism or feminism or marxism all approaches to international politics have not highlighted the need of protection of the environment number one number two environmental degradation is a reality in the world today number three the current paradigm of economic development Sir, just is slowly leading to लिखिए. the Excuse me, sir. Slowly लिखिए. हाँ कुआ Number 2 points. slowly लिखिबी Slowly ଟିକେ अच्छा देखिए मो होनी. स्लोली कहली तुम लिखिबी ओके ओके लेखार गोटे नियमटा है कौन श्रुत लिखन तुम पंचम श्रेणी पढ़न आगे शुणव तापर लिख तुम प्रोब्लेम कौन हो मु आरंभ कला बेलू तुम लिखि दौ नो तुम लास्ट शुणी पार लिख अगेन ठीक है ओके वन इज वन सेकंड traditional approaches neglected environmental factor or factor of environment in global politics. Traditional approaches neglected environmental issue or factor of environment in global politics. Number one. Hello. Second is environmental degradation is a fact in world today. Environmental degradation is a fact in world today. Third है Western model of development. Western model of development. Western model of development led to environmental degradation. Led to environmental degradation. এটা কত নম্বর পয়েন্ট গলা 3 নম্বর তারপরে 4 নম্বর দেখো there was a need of sustainable development. There was a need of sustainable development. Sustainable. SUSTANIABL. Sustainable development. Okay. So there is a need of environmental approach. So there is a need of environmental approach for sustainable development.
Okay. So this is the background, historical background of the emergence of environmental approach in world politics or international relations. You cannot neglect the issue of environment for a long period when there is a danger to the very existence of humankind or surviving planet. ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଜଗତ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ତମ ପରିବେଶ କଥାଟାକୁ ଘୋଡେଇକି ବା ଦବେଇକି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଆପ୍ରୋଚ କହିଲା. So we talked of certain development goals, Paris climate change and other things. Okay, so this is all about environmental approaches. Now come to the next chapter, that is world views from Asia, Africa and Latin America. So why there is a need of world view from Asia, Africa and Latin America? The most important thing in international politics is that it is a Western-led politics or political theory or approach. Whatever we are studying or we have been studied or we have been given to study, that are the view regarding world politics by the Western universities, by the Western experts, by the Western nations, that we are studying, that we are recreating and internalizing within ourselves. We have never given importance to the views regarding world politics from peripheries. That is the important thing, because the periphery, the third world or the poor world, have major contributions towards the development of international theory. ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାହା ଯାହା ପଢିକି ଆସୁଥିଲେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ ଯାହା କହିଲେ, ଆମେରିକାରେ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ, ଜର୍ମାନୀ, ସେଇଗୁଡା ପଢିକି ଆସୁଛନ୍ତି. ଏସିଆରେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଫ୍ରିକାରେ କ'ଣ କହିଲେ, ଲାଟିନ ଆମେରିକାରେ କ'ଣ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଗ୍ଲୋବାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କ'ଣ, ତାପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଆସିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି. ସେଇଟା ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢା ହଉଛି. Views from third world, particularly from Asia, Africa and Latin America. Okay. So we have concrete scientific perspectives from these sides of the world towards world development, towards war, towards peace, towards global relationship, towards global politics. So they emerged they engaged themselves in the Cold War. You know, after Second World War, there was Cold War. Two camps, one led by Russia, one led by America. And they tried to divide the entire world and control the world. There is no third alternative. ତୃତୀୟ ରାସ୍ତା ଯେମିତି କିଛି ନାହିଁ. ଆମେରିକା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଧେ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିବେ, ରଷିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଧେ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିବେ. ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ, ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ, ପଲିଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ, ୱାର ବିଷୟରେ, ପିସ୍ ବିଷୟରେ, they are right. ତାକୁ ତମେ ବାଇନାରୀ means two approaches, ଆଉ ଥାର୍ଡ ନାହିଁ. either or, ତମେ ସେ ରଷିଆକୁ ଠିକ କହିବ ବା ଆମେରିକାକୁ ଠିକ କହିବ, ବା ଆମେରିକାକୁ ଭୁଲ କହିବ ବା ରଷିଆକୁ ଭୁଲ କହିବ, ଆଉ ଯେମିତି କିଛି ନାହିଁ. But you will be astonished to know there is a major theoretical developments approaches from third world countries. जोटा ଆମେ earlier ମଧ୍ୟ ପଢିଛନ୍ତି theory, जोटा Latin American theory of development, that is development of underdevelopment, Andergunder Frank, center periphery, world system, Emmanuel Wolsternen, ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ସେଟା. So now we have approaches from the third world apart from Moscow and Washington. Moscow, Washington को छाड़िकी आउरी गुड़ाए कथा आमे एठु आसु. कोन सेमान प्रथमे आमे देखिबा गांधी को. What is the contribution of Gandhi from Asia? So Gandhi had a major contribution to the development of theory in international relations. अंतर्जातिक संपर्क करे बा world politics रे Gandhi had a serious impact. What is that? You know, Gandhi is identified with non-violence. So when two camps are fighting with each other in hot war as well as in cold war, Gandhi offered during the freedom struggle that in his writings, in his speeches, there cannot be an alternate to ahimsa, non-violence. Non-violence is the only way. ahimsa छड़ा बाट किछि नाही, ए कथा गांधी बारंबार कहिसंती एवं बारंबार प्रमाणित होउचंती. You cannot solve your problem through war. Israel is attacking Palestine to finish Hamas, but it has not been able to finish Hamas. हिंसा माध्यम युद्ध माध्यम इजराइल जो कथा कहला जे हमास को ध्वंस करदब, एपर्यंत हमास को ध्वंस कला ना. निरीह महिला शिशु 50,000 मारदेला. रशिया जो करदेला पूरा यूक्रेन को नहीं जीव, एपर्यंत नहीं पारने. 3 वर्ष युद्ध होगला, यूक्रेन ध्वंस होगला.
So Gandhi gave a very relevant approach to world politics by saying non-violence is the only method, way, objective of the world or world civilization. Second कथा गांधी कहले जोटा में एनवायरमेंटल अप्रोच पढ़ुतले जे सिंपल लाइफ सरल जीवन लिमिटेड नीड्स सीमित आवश्यकता जोटा कहती काटी खाओ एवं कुटी खाओ काटी पिंधाओ you need whatever you require not beyond that गाड़ी दरकार गोटे गाड़ी चढ़ 10टा 20टा गाड़ी रखा दरकार नहीं सिंपल लाइफ कथा गोटे एनवायरमेंटल फ्रेंडली लाइफ कथा गांधी से कथा कह स्पिरिचुअल फोर्स सेकंड कथा स्पिरिचुअलिटी कथा आध्यात्मिक कथा यू कैनॉट अचीव पीस थ्रू कंज्यूमरिज्म यू कैनॉट अचीव पीस थ्रू अनलिमिटेड वांट्स असीम अभाव जेतले तमर हबो असीम अभाव भितर तुम जो तुम मानसिक दुश्चिंतार पड़ो चापर रोगग्रस्त हम मृत्युवरण कर यू कैनॉट गेट पीस सो गांधी डेवलप्ड द आइडिया ऑफ व्हाट spirituality and second important thing Gandhi said the relationship between end and means end cannot justify means there is a moral relationship between end and means you cannot achieve your good end by a bad means भल लक्ष्यटी खराब उपाय तुम पाइपर ना जदि पाइब से तुम शांति पाइब ना गोटाए राष्ट्र को युद्धर ध्वंस कर यू कैनॉट एक्चुअली विन द वार सेकेंड वर्ल्ड वार आम देखिले यू दे अलाइड पावर्स एक्चुअली डिड नॉट विन द वार और विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल लोक हृदय तुम युद्ध माध्यम जानी पार ना तेणु मोरालिटी बिकेम ए क्वेश्चन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय गांधी सो दीज 4-5 points from Asia, Gandhi had a major contribution to the moral standards of the behavior of the states. से केवल यही कथा मनुष्य मानक व्यवहार कहले नहीं वर्ल्ड लेवल ले कहले दिस ए मेजर कंट्रीब्यूशन जोटा को हमें नेग्लेक्ट कर पढ़ी ना तार गुरुत्व आवश्यकता अच्छी फर्स्ट है नॉन वायलेंस सेकंड है सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ थर्ड इज स्पिरिचुअलिटी फोर्थ इज morality or relationship between ends and means. Okay. So Gandhi said, you cannot enter into military alliances. You need not enter into military alliance. सामरिक मेंटो जोटा होउची अमेरिका रो बा रशिया वर्षा मेंटो नाटो मेंटो ता भितर को गरीब राष्ट्र माने पसिवा उचित जेतर तांकर विकास बाधाप्राप्त ओके सेकंड आसिले टागोर हैज ए मेजर कंट्रीब्यूशन टागोरଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା टागोर कोन कहले so he rejected the idea of nationalism interesting you must not be knowing it many people must not have idea जे टागोरଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ कंट्रीब्यूशन हैला he rejected opposed the idea of nationalism so what is this nationalism जातीयतावाद ଗୋଟେ कोन every country is a friendly country if you aggressively pursue the policy of nationalism तुम देखो मो जाति बड़ मो देश बड़ अन्य मान छोट देखो से वार को कन्वर्ट कर से ग्रेट वार जो फास्ट वर्ल्ड कारण से कहले नेशनलिज्म से कहले टागोर नेशनलिज्म इज द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी ऑफ द यूरोपियन नेशन स्टेट्स यूरोपीय जाति मानकर राष्ट्र मानकर एटा आत्मध्वंसकारी प्रक्रिया बा प्रवृत्ति जोड़ा हूँ नेशनलिज्म जातीयतावाद हूँ आत्मध्वंसकारी प्रवृत्ति प्रथम विश्वयुद्धर कारण है जातीयता गोटे मेकानिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल लोक मानू मेकानिकली यूनाइट कर गोटे जगह तुम कह वी आर ए नेशन वी आर ए जर्मन नेशन वी आर इटालियन नेशन वी आर ए फ्रेंच नेशन सेकेंड कह वी आर ग्रेटर देन देम थर्ड है वायलेंस आड़ को जीव रिलेशनशिप खराब हम वार हम है सो this will lead to aggressive character and imperialism. So nationalism in its aggressive form leads to imperialism. जातीयतावाद आक्रमणात्मक सेटा साम्राज्यवाद रे परिणत हो जो सेकेंड वर्ल्ड वार मध्ये टागोर सठिक प्रमाणित ले हिटलर से कला हिटलर टोल्ड आर्यन रेस इज द बेस्ट रेस इन द वर्ल्ड प्योर रेस इन द वर्ल्ड इट हैज अ मोरल राइट टू रूल ओवर द वर्ल्ड सो इट हैज द मोरल राइट टू अटैक आर्य जाति सबुठारु बड़ जाति सर्वोत्कृष्ट जाति ये पृथ्वी की शासन कर नैतिक अधिकार अच्छी
तेणु अन्य मानक आक्रमण कर अधिकार अच्छे तो हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वार हो so that's why Tagore has a major contribution in the development of a critique of nationalism, particularly the aggressive form of nationalism. So Tagore told that the major problem in the world is because of nationalism. Okay. And earlier, Gandhi told Videshi version जो concept आसला freedom struggle रे विदेशी वस्त्र व्यवहार करो नहीं विदेशी वर्जन करो गांधी से कथा कहते the tariff होबनी तमर जाची you need not to identify yourself brand yourself but on globalization we have been branding ourselves आमे निजु branding करू मु ए घड़ी पिंची iPhone use करूची diesel jean use करूची these are global brands man does not have any identity मनुष्यर निजस्व परिचय आउ किछि ना you are being identified you are being defined you are being redefined by the brands you are using को गाड़ी चढ़ो को घड़ी पिंच को फोन यूज कर को ड्रेस पिंच को ब्रांड रो जोता पिंच सो यू हैव बीन ब्रांडेड तमरो निजर ब्रांड नाही निजस मनीष हिसाब रे तमे भलो मनीष खराब मनीष बा तमे भलो पिला खराब पिला सियाउ नाही तमरो को ब्रांड यूज करछो तमरो आइडेंटिटी सेफ क्रिएट करछ एटो की क्रिएट करछ एटो को जो ग्लोबलाइजेशन क्रिएट एटो चैलेंज करछन गान विदेशी वर्जन कॉन्सेप्ट सो नेशनलिज्म तो चैलेंज करछन की Tagore, okay. So they tried to develop a concept of pan-Asianism. माने एशिया रो गोटे मेंटो जो करबा एशिया डेवलप करबा एटा अटेम्प्ट हला कि हेई परला ना कारण एशिया रे डाइवर्सिटी अछि एशिया रे चाइना इंडिया भीतर द्वंद्व हला चाइना अलगा बाटे इंडिया अलगा बाटे तांको भीतर हेई परला ने बंधुत्व फर्स्ट किछि इयर से माने युद्ध को चली गले अन्य मानक भीतर कल्चरल डाइवर्सिटी दिला मिस परले नै सो देयर इज नो successful pan-Asianism. So Asia has a major contribution toward the development of international theory and particularly by Tagore and Gandhi. Okay. Second है Africans. African माने असले Africa was altogether different from Asia. Africa somehow has a cultural affinity. तांकर गोटे सांस्कृतिक ऐक्य थिला. तांकर खाइबा स्टाइल बंचिबा लाइफ स्टाइल तांकर बॉडी स्ट्रक्चर there is some kind of cultural unity. So that developed the African unity, Organization of African Nations. Then Arab world. Arab world रे कमल मुस्तफा इजिप्ट नासेर non-aligned movement कले non-aligned पढ़िबा ए माने मध्यम बहुत उद्यम कले जे गोटे डेवलप करिया पई मुस्लिम वर्ल्ड तक गोटे कैलिफेट जोटा खलीफांग राज्य थला अरब वर्ल्ड ऑटोमन एम्पायर पतन परे सेमानक भीतर हला तापर इजिप्ट नासेर डेवलप करे अरब वर्ल्ड को यूनाइट करे ही बिकेम ए हीरो ऑफ द अरब वर्ल्ड एंड यू नो द ट्रियो जो तीन जण नेता गोष्ठीनिरपेक्ष आंदोलन को सफल करैतले ता भीतर जण हेले के नेहरू टिटो एंड नासेर so this Nasser used pan Arab unity or pan Arab world as a geopolitical concept. He tried to unite the entire Arab world. मिडल ईस्ट मध्य प्राच्य जोटा साउदी अरब जोटा काली तुम कहली पैलेस्टाइन लेबानन सीरिया ईरान इराक इजिप्ट ओके सुदान सो सी प्रथम कौन कले ना ये डेवलप करेले एवं आंग्लो फ्रेंच इन्वाजन को विरोध कले एवं गोटे लीग तैयारी कले इजराइल अटैक को विरोध कले एवं से हीरो हो गले अरब वर्ल्ड यूनाइटेड अरब रिपब्लिक कथा कॉन्सेप्ट कथा से कहले सीरिया और येमेन सहित मिसिक सो ही रोट ए बुक फिलोसफी ऑफ रिवोल्यूशन सो वी फाइंड ही ट्राइड टू कॉन्टैक्ट डेवलप रिलेशनशिप अरब वर्ल्ड अफ्रीका वर्ल्ड एंड मुस्लिम वर्ल्ड he became a hero and he posed the alternative model of global politics he has a major contribution से अरब मान को इंस्पायर करे अफ्रीकन अरब यूनियन तैयारी कले सक्सेसफुल मध्य हले अनेक परिमाण के लास्ट आडू तांगर डिक्लाइन हेला कार नासेर सो नासेर मु तुमको एशिया रु कहली गांधी और टागर नासेर मध्य मेजर कंट्रीब्यूशन अल्टरनेटिव ग्लोबल पॉलिटिक्स मान जोटा यूरोपियन अमेरिकन रशिया तांको नेतृत्व जोटा होतरा तार एक विकल्प भाव रे माने गांधी नेहरू टागोर एवं एमाने कले तापर हम आसीबा लैटिन अमेरिका तो मु भाबु जे मु तुम पढौनी कोटा जे लैटिन अमेरिका कोटा को जाय ज्योग्राफिकल किछि कंट्री ना को ऑलरेडी हम लैटिन अमेरिकन मींस
खाली कहते जाको पृथ्वीर गुड़ हांडी कह जाए से जो अंचल दैट इज क्लोज टू अमेरिका दैट इज व्हाट द कंट्रीज पेरू चिली अर्जेंटीना फुटबॉल प्लेयर जो बेसी अच्छे निकारागुआ Paraguay, Cuba, these are the Latin American countries. And there developed a revolution. There was a competition between America and Europe to control Latin America. So Latin America developed itself. Jose Martin, San Martin, Fidel Castro, Che Guevara, these are the leaders that developed there. So they developed a pan-Americanism but failed, but they mainly became anti-American by fighting their own revolution. So this is how Latin America emerged as another central point or point of attraction, point of alternative politics and global relationship or international relationship. ये हला तीनटा एरिया जो नुआ नुआ अल्टरनेट थ्योरी आसिला लाटिन अमेरिका अफ्रिका अरब वर्ल्ड एंड एशिया ना गुडा मु कहली तापरे we have non-alignment. I hope you have idea about non-alignment. Goshnarthaka Andolan. That is a major alternative politics in world relations, international relations. It is a bikorpa tattva theory hela. A major factor hela kiye Nehru, Nasser and Tito. Their foundation padla Bandung Conference 1955 in Indonesia. Indonesia ro gote sahara re Bandung सम्मेलन hela. Se sahara na ta hoji Bandung. ताको बांगदुंग स्पिरिट कह जाए सेठी दैट इज इन अप्रैल 1955 29 states attend कलो एवं इट वाज अटेंडेड बाय लीडिंग फिगर्स से ना गुडे लिख परियो तमे चाओ एन लाई फ्रॉम चाइना चाओ एन लाई CHOUENLAI ब्रैकेट छाड़ी की दिखे NEN-लाई LAI तापर नेहरू फ्रॉम इंडिया सुकार्नो फ्रॉम इंडोनेशिया एंड जॉन कोटेला फ्रॉम श्रीलंका कोटेलेवाला हाँ ओके so who are the prominent leaders of non-aligned movement all of you know they are Nehru, Nasser, Tito. It's right. Nehru, Nasser, Tito, तांकर trio इटा गोष्ठनपक आंदोलन को प्रतिष्ठा करते. But before that, there was a conference known as Bandung Conference, BANDUNG, Bandung Conference, that laid the basis of non-alignment. गोष्ठनपक आंदोलन नो भित्ति भूमि प्रतिष्ठा है. सेत्रे प्रथम यही लीडर माने join. China joined, India joined. Then Indonesia joined, then Sri Lanka joined. So from China it was Chao and Lai, from India it was Nehru, from Indonesia it was Sukarno, and from Sri Lanka it was John Kotelewala. Kotelewala, Kotelewala. It was interesting that China joined non-alignment first. China's Chao and Lao made an impressive appearance there and he became very popular. So China talked on self-determination, right to self-determination. Then what was the outcome of Bandung Conference? So Bandung Conference had some principles. The principles of Bandung Conference became the principles of non-alignment, became the philosophy of the non-alignment. What is that? That became anti-imperialism, anti-colonialism, right of self-determination, equitable development, equidistance from two worlds, that is socialist world and capitalist world, led by America and Russia. These are the common principles: disarmament, arms control, peace. These are the declarations in the Bandung Conference, which became the principles and philosophy of non-alignment. Bandung सम्मेलन रे जो गुड़ी को घोषणा हला परवर्ती पर्याय रे से गुड़ी को
गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन दर्शन भाव गृहीत से पॉइंट गुड़िक तुम लिखिपर। वन इज एंटी इंपीरियलिज्म, सेकेंड इज एंटी कॉलोनियलिज्म, थर्ड इज पीस एंड डेवलपमेंट, सर पीस एंड डेवलपमेंट, disarmament, disarmament, DIS, ARMA, MENT, disarmament, development, ना peace and development लिख लो, decolonization, decolonization, equidistance, equidistance, neutrality, neutrality. So these are the major principles. How both अच्छी that are mainly major principles of non-aligned movement. Okay. डीकोलोनाइजेशन में कौन हाँ, decolonization. अच्छा होला? डीकोलोनाइजेशन में कौन है हाँ? सुबह डीकोलोनाइजेशन decolonization माने हाँ माने पचार तो हाँ सर जोड़ा कॉलोनी थला स्वाधीनता पाइबा जो माने कॉलोनी थिले साम्राज्यवादी बा उपनिवेश राष्ट्र जेनी इंडिया कॉलोनी थिला हां एंटी कॉलोनियलिज्म लेखिछु ना ना एंटी कॉलोनियलिज्म माने कॉलोनियलिज्म के हम अपोज करी डीकोलोनाइजेशन माने जो कॉलोनी रो मुक्त हवा पई वे प्रक्रियाटा त्वरान्वित दोज हु कंट्रीज व्हिच हैव नॉट बीन freed from which have not got independence till 1955 1955 सम्मेलन होछि ना 1955 रे समस्त राष्ट्र स्वाधीनता पाइना जो माने पाइना से माने पाइबे आउ फर्दर कॉलोनाइजेशन को विरोध करबा एंटी कॉलोनियलिज्म उपनिवेशवाद को डीकोलोनाइजेशन ला उपनिवेशवाद को ध्वंस करबा त्वरान्वित करबा प्रक्रिया डीकोलोनाइजेशन एंटी कॉलोनियलिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स हैला बुझला तो हां सर The first non-aligned movement conference was held in 1961 in Belgrade. प्रथम गोष्ठी निरपेक्ष सम्मेलनी इटा प्रस्तुति सम्मेलन थिला याकु बेस करके नॉन अलाइन्ड मूवमेंट हला एटा 1961 ने हला बेलग्रेड हला एट क्वेश्चन से आसला डीकोलोनाइजेशन क्वेश्चन फ्रीडम ऑफ द स्टेट्स दैट इज डीकोलोनाइजेशन पीस से को सॉल्ट वन आरंभ हो गलानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स एवं 62 रे हेला क्यूबान मिसाइल क्राइसिस परमाणु युद्ध होइतांता अल्प के बंची गले सेठी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट रो क्यूबा रे हेला क्यूबा वाज ए मेंबर ऑफ नॉन अलाइन्ड मूवमेंट दैट बिकेम ए मेजर इशू देन देयर वाज इशू ऑफ डेवलपमेंट इन अफ्रीका अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड सो डेवलप्ड नेशंस developing nations, least developed nations, उन्नत राष्ट्र विकासशील राष्ट्र अति अनुन्नत राष्ट्र ये कॉन्सेप्ट आसला तो नाम इज नॉट नॉन अलाइन्ड इट इज अलाइन्ड इट इज ए पॉजिटिव अप्रोच से कथा नेहरू कहले अन्य माने कहले नॉन अलाइन्ड में मूवमेंट मींस डज नॉट मीन वी आर नॉट अलाइन्ड वी आर अलाइन्ड विथ पीस वी आर अलाइन्ड विथ डेवलपमेंट वी आर अलाइन्ड विथ इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हमें ता विरुद्ध रे लड़ी एंटी इंपीरियलिज्म विरुद्ध लड़ू कॉलोनियलिज्म विरुद्ध लड़ू तो पॉजिटिव एस्पेक्ट रे इटा इमर्ज कर
The 61 to 91 पर्यंत there are serious crisis in different parts of the world. पृथ्वीर विभिन्न अंचल रे विशेषकर क्यूबान मिसाइल क्राइसिस हला क्यूबा को इन्वॉल्व करी रशिया अमेरिका भितर युद्ध होता देन जोड़ी जोड़ी मूवमेंट हला स्वाधीनता से अमेरिका से सरकार गुड़िक समर्थन कले माने कॉलोनियल सरकार को समर्थन कला ताकू नहीं कि नॉन अलाइनमेंट ग्रोथ कला आंगोला मूवमेंट हला सब हम डिटेल हिस्ट्री तापर क्यूबा रे स्वाधीनता आंदोलन ता सहित फिडेल कास्ट्रो नुकुमा ऑफ घाना दे बिकम लीडर रेडिकल मूवमेंट हला नॉन अलाइन मूवमेंट सो नुकुमा एंड क्यूबा फिडेल कास्ट्रो और चे गुएवारा दे ट्राइड टू गिव ए रेडिकल कैरेक्टर टू नॉन अलाइन तापर अल्जेरिया आसला ये समस्ते गोष्ठीनिरपेक्ष आंदोलन को एक वैप्लविक चरित्र देवा चेष्टा कले वर्ल्ड गोटे थर्ड फोर्स भाव में तुम चिंता कर इंडिया डिड नॉट हैव एनीथिंग भारत किछि नथिला ओके भारत पाखरे ना टंका थिला ना पैसा थिला ना अस्त्र थिला किछि नथिला किंतु भारत गोटे पावरफुल कंट्री हेतले थिला वर्ल्ड पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ नेहरू बिकॉज ऑफ नॉन अलाइनमेंट यू इमेजिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ Nehru laid the foundation of Indian foreign policy, not only of Indian foreign policy, but also the entire global politics, global relationship. Because all the major nations of the world, more than 75% nations of the world, they joined non-aligned movement under the leadership of Nehru, Nasser and Tito. So you did not have military weapon. We did not have nuclear weapon. Even we did not have food, sufficient food for our food security. Still then Nehru was a global leader because of the Gandhian influence, of the Gandhian contribution. What is the Gandhian contribution? The concept of peace, concept of development, concept of no to war, no to arms race, yes to disarmament, yes to development. These are positive slogans given by India and non-aligned movement in the world when there was a Cold War, severe Cold War, and arms race between America and Russia. And both groups are trying to capture the entire world. हमको अभियोग करा जाए नॉर्मल रशिया सपक्ष थिला यस पॉजिटिव पॉइंट सपक्ष थिला अमेरिका नाटो एंटायर वर्ल्ड को डोमिनेट करियो चाह किंतु सेतेबेले नेहरू कोन कले जो गोष्ठीनिरपेक्ष आंदोलन कले मैक्सिमम सब राष्ट्र एथरे जॉइन करियो सो यू अंडरस्टैंड बर्तन ये जनरेशन जो माने तमे स्टूडेंट you cannot understand the significance of non-aligned movement during that period. That gave an alternative path. The entire world is suffering from cold. पृथ्वीर सबु राष्ट्र सबु मनीष माने शीतल युद्धर शिकार हो जी न हम तापर प्रेशर करते तमें आम पाक आस तमें आम पाक आस से गोटे चैनल बा अल्टरनेटिव स्पेस टे ए माने देले गोष्ठीनिरपेक्ष आंदोलन रे ना रे से समस्ते जॉइन कले सो तमदी मोहम्मद गद्दाफी ना शुणिथो लिबिया प्रेसिडेंट तार जदि वॉइस शुणिबो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट संपर्क करे गोटे इंटरेस्टिंग कथा से कहि एक्चुअली इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ल्ड नॉन अलाइनमेंट हैज बीन डिफीटेड से दुखर कहउछन जे प्रकृत अर्थ रे नॉन अलाइनमेंट आउ नाही परास्त हे जे बोथ बाय आवर ओन फाउंडेशन एंड बाय द ग्रेटर फोर्सेस व्हिच कंपेल अस बड़ बड़ शक्ति माने हमको बाध्य करछन एवं आमे मध्ये नियम उल्लंघन करछ इट इज सफिशिएंट टू से दैट हु आर द फाउंडर्स ऑफ द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जो माने गोष्ठीनिरपेक्ष आंदोलन प्रतिष्ठाता थिले अनफॉर्चुनेटली थ्रू प्रेशर हैव अडॉप्टेड ऑब्लिगेशंस व्हिच कैन नाइदर एक्सेप्ट और अप्रूव बड़ बड़ राष्ट्र माने जो माने प्रतिष्ठाता सभ्य से माने सब पक्षपाती हे गेले काकू समर्थन कले काकू ये करे हमर को आइतला इक्वी डिस्टेंस माने बृहत शक्ति ठारू समान दूरता रखिया किंतु के मिसी गेले जेतेबेले इंडिया रे नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस हला Fidel Castro was the chairman of non-alignment, and from him Indira Gandhi took over the charge of chairman. भारत गोष्ठीनिरपेक्ष आंदोलन मुख्य हला इंदिरा गांधी तार चेयरमैन हेले सेतेबेले इंडिया टुडे मैगजीन गोटे कार्टून बाहरला माने शांति पई सब कपत राष्ट्र माने कपत शह शह राष्ट्र जाउचंती दिल्ली सम्मेलन करी सेतरे बाटी रे खुंपा खुंपी होउचन तार तो नॉन अलाइन्ड कंट्री माने परस्पर विरुद्ध रे मध्य लड़ुछ सेतरे बड़ गोटे कैप्शन थिला जे इंडिया पाकिस्तान खुंपा खुंपी होउछ अर्थ इंडिया इंदिरा गांधी चेयरमैन होती नॉन पीस कथा कहूँ निज भर बढ़िया हो स्टिल देन इट बिकेम ए मूवमेंट मोस्ट ऑफ द नेशन जॉइंड इट दैट वाज ए ग्रेट लेसन
great achievement of the non-aligned movement. Alternative paths are there. Second major contribution non-aligned movement rahala new. It like NIEO. New international economic order. Just मोटे पानी खाली पीते आसुची. So, new, what is new? New international economic order. So, non-aligned movement challenge the existing international economic order as unequal, as oppressive, as opposed to the interest of the developing nations or poor nations. तो एमाने नॉन अलाइनमेंट वाला कहले जे वर्तमान विश्व अर्थनैतिक व्यवस्था विकासशील राष्ट्र बा गरीब राष्ट्र मानकर स्वार्थ विरोधी असमानता आणुची सो दे डिमांडेड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर नुआ अर्थनैतिक व्यवस्था प्रतिष्ठित हो. दिस इज ए अल्टरनेटिव टू इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड लेड बाय वेस्टर्न डेवलप्ड नेशंस एंड रशिया. So that was still relevant today. Why? Because when non-aligned movement became weak after the end of Cold War, and when the world became unipolar under the leadership of America, Russia was disintegrated. There was economic globalization that destroyed the entire world. I mean, environmental approach रे पढ़ुथले जे अर्थनैतिक जगतीकरण बा ग्लोबलाइजेशन जाउ कहउछ केमिति पृथ्वीर परिवेश को ध्वंस करदेला दारिद्र्य अधिक हैला एवं राष्ट्र राष्ट्र भितरे लोक लोक भितरे अर्थनैतिक असमानता वृद्धि पाए. सेतेबेले न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर कथा कहितले के नॉन अलाइन्ड कंट्री वन सेतेबेले 74 रे सेमाने कहले. तो बर्तमान दैट इज स्टिल रिलेवेंट because the present economic world order is opposed to the interest of the developing nations, poor nations, African nations, Latin American nations, and Asian nations. Okay. तापरे 72 रे जो गुआना रे हला जॉर्ज टाउन गुआना रे नॉन अलाइन्ड मूवमेंट फॉरेन मिनिस्टर को कॉन्फ्रेंस हला तापरे लुसाका कॉन्फ्रेंस हला सिर्फ पडाला कोन को आगला इट इज पॉवर्टी ए सेंटेंस ता देखो हाउ इंपोर्टेंट इज नॉन अलाइन्ड मूवमेंट अप्रोच टू डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड एंड व्हाट इज इट्स कंट्रीब्यूशन हमें भूली गेलनी बर्तन नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जदि वो पढ़ा हो हमर सी कहले लुसाका कॉन्फ्रेंस रे इट इज पॉवर्टी के कहले आज जूलियस नायर से कहले इट इज पॉवर्टी which constitute the our greatest danger and to a greater or lesser extent we are all poor. वर्तमान दारिद्र्य होची सबठारु बड़ विपद पृथ्वी रे परमाणु अस्त्र ठारु आउरी बड़ विपद एवं आमे समस्ते माने नॉन अलाइन्ड मूवमेंट रो जो माने सभ्य राष्ट्र अल्प रहू बेसी रहू गरीब जेहेतु आमे सब गरीब दारिद्र्य होची आम पई विपद तेणु आमे दारिद्र्य विरुद्ध लड़िबा एथि पई न्यू इंटरनेशनल economic order darkar. That is the background of the emergence of the concept of
new international economic order. Now the economic order led by World Bank, International Monetary Fund, and World Trade Organization, they are further marginalizing the weaker nations of the world. They are making weak nations of the world, poor developing nations of the world, more poor and more weaker. So we need that debate again, reinvented, redesigned, redefined in the present world to challenge the global economic hegemony of global capitalism, of neoliberal imperialism. That is what we need. So, NEO should be based on equity, sovereign equality, interdependence, common interest, and cooperation among all the states. This can make it possible to eliminate widening gap between the developed and developed countries. ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାପଟାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ନା ସମାନତା ଦରକାର, ସାର୍ବଭୌମ ସମାନତା ଦରକାର, ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦରକାର, ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦରକାର. What is happening? Now the capital is moving all around the world in search of cheap labor and is exploiting the labor of the third world country. Huge economic division between the developed nations and developing nations. Huge economic inequality between the rich people and the poor people. So that was another biggest contribution of non-aligned movement, world politics. So now it has changed. There nobody talks of non-aligned movement. Okay, okay. So ଆଉ ଗୋଟେ ତାର major factor ହେଲା जो इंडिया पाकिस्तान वार ହେଲା, इराक वार ହେଲା, तांजानिया वागांडा वार ହେଲା, war in Horn of Africa ହେଲା, ଅଛି ବହିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି just କହିଦେବି, invasion of Kuwait by Iraq, all these wars among the third world countries are non-nations, non-aligned movement nations. So that became very important to weaken non-aligned. ତମେ ଗୋଷ୍ଠୀନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିବ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବାଡିଆ ପିଟା ହବ, ଇରାକ ଇରାନ ୱାର ହବ, ଆମେରିକା ସେଠି ଇନଭଲ୍ଭ ହବ. So you will see in the history everywhere all wars are controlled, led by America. ଯେତେ ରିଜନାଲ ୱାର ହେଇଛି ସେଥିରେ ଆମେରିକା ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଛି, ପଶିଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ବାହାର କରିଦେଇଛି. ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ୱାରରେ ଆମେରିକା ସପୋର୍ଟ କଲା ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ୱାରରେ ଆମେରିକା ସପୋର୍ଟ କଲା ପାକିସ୍ତାନ, African war रे अमेरिका सपोर्ट कला अफ्रीकन नेशंस को, मिडिल ईस्ट रे इजराइल को समर्थन कला. So everywhere America is poking, then Russia was countering. So after the disintegration of Russia, there was nobody to challenge America. रशिया भाग भाग ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେରିକା କୁ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ଗୋଷ୍ଠୀନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାର ଡେଡ୍ ହେଇଗଲା, almost dead. So now the question is there a relevance of non-aligned movement? Yes and no. Yes means non-aligned movement is not only neutrality or equidistance from two camps. It is a question as far as if there are no two camps, what is the meaning of non-aligned? गोष्ठी निरपेक्ष माने कौन? आमे कौनसी गोष्ठी रही जदि और दीटा गोष्ठी नांते आ गोष्ठी निरपेक्ष माने कौन? No. This is the contribution of non-aligned movement on positive aspects. Anti-imperialism, it is still relevant. New international economic order, still relevant. Fighting for economic equality, still relevant. Sustainable development, still relevant. So on these questions, we need a new non-aligned movement of the third world developing countries. Okay. There are now regional groupings, BRICS, Quad, G20. Okay. So this is all about non-aligned movement. I explained you. There doubt अछि या पर हम कोल्ड वॉर को जबा यार इंपोर्टेंट क्वेश्चन उडा लिखि दो दीटा चैप्टर रो लेखो क्वेश्चन लेखो तापर डाउट हो क्वेश्चन पचारियो यार लेखो ए जो नॉन अलाइन मूवमेंट
Discuss the reasons of emergence of non-aligned movement. Discuss the reasons of Discuss the region of the emergence of non-aligned movement. Discuss the reasons of the emergence of non-aligned movement. ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଭ୍ୟୁଦୟର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। What is contribution of Mahatma Gandhi towards development of theory in international politics? Sir, okay. development of Theory in international politics. ସାର୍ ଆଉ ଥରେ କହିବେ? Development of theory in international politics. ହେଲା? Discuss the philosophy of non-aligned movement. Discuss the philosophy of Non-aligned movement. Okay. ତାପରେ what is Nasser's three circles? What is Nasser's NASSER? Nasser's three circles. ଡାକୁ ତମେ ଲେଖ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି WhatsApp. What is message of? What is Nasser's three circles? What is Tagore's approach to nationalism? What is Tagore's approach to nationalism? What is Tagore's approach to nationalism? Why why non-aligned movement declined? Why non-aligned movement declined? ବୈଷ୍ଣବିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ଅବକ୍ଷୟ ହେଲା? Why non-aligned movement declined?
What is new? NIU. What is new international economic order? International. What is new international economic order? What is eta sarigala ए chapter ro तापर next chapter जो first chapter लेखो what is sustainable development? What is sustainable development? निरंतर विकास कौन से ब्रुंडेड लैंड कमिशन रो डेफिनेशन लिखियो आउ एटा लिखियो होला Sir, out there. What is? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन तुम पीजी पिला एकाथरे सुनी लिखतो ना यार सेकंड ला व्हाट इज नॉर्थ साउथ डिवाइड व्हाट इज नॉर्थ साउथ डिवाइड दक्षिण उत्तर गोलार्ध विभाजन कौन ହେଲା what is north south divide what is environment development debate what is environment development debate ଦେଖିଲ how next question how environmental approach challenged challenge the myths myths challenge the myth challenge the myths of development policy or myths of development chapter लिखिल कौन एटा लिखिल तमर कौन डाउट होला तो Hello. को Sir, to discuss the philosophy of non-alignment. एटा एंटी इंपीरियलिज्म Thanks. एंटी कॉलोनियलिज्म डीकोलोनाइजेशन न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर
ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଇକ୍ୱିଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା। Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ଆଉ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ପଚାର। ଏଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଡାକିଲି ଲେଖିଲ? ଠିକ୍ ଲେଖିଲ କି ନାହିଁ? ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା How environmental approach challenge the myth of development or development policy? challenge the myth, MYTHS, myths of development or development. ମୋର ଗୋଟେ I have a TV debate ଅଛି ଯୋଉ ଗାଜା ଆଟାକ୍ ଉପରେ 8ଟା ବେଳେ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ସେଠିକି ଯିବି। ତମର ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ କ୍ୟାନ୍ ଗो, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଟା ସରିବନି, ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ଅଛି, ପୁରା ଡିଟେଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଟା ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଲି କି ଏଟା ଗୋଟେ ଲେଖିଦ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଆରବ ୱାର୍ଲଡ। ଆରବ ୱାର୍ଲଡ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ? ନାସେରର ରୋଲଟା ଲେଖିବ ଏଥିରେ ହେଲା। କାଲି କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ଟା ପଢ଼ିବ। ସାର୍ ଯୋଉ ଆରବ ୱାର୍ଲଡ ରେ ସେଇଟା କ'ଣ ନାସିରଙ୍କ କଥା ରହିବ? ଆରବ ୱାର୍ଲଡକୁ ସେ ମାନେ ଇଏ ମିଶେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନା, ସେ ଯଦି କିନ୍ତୁ ଆରବ ୱାର୍ଲଡ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ମିଶେଇବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଗୋଟେ ଡେଭଲପ କରିଲା, ହିରୋ ହବାକୁ ଚାହିଁଲା। ତେଣୁ ତାର ଲାର୍ଜର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିଲା ନା, ସେଥିରେ ରଖିବ ଆରବ ୱାର୍ଲଡ। ଆଉ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କୁହ? ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଶିକି ଅଛି? ହଁ, ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି। ତମେ ଯଦି ଲଙ୍ଗ ପଢିଲା ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଦବ, ସର୍ଟ ଧର ମୁଁ କହିଲି ଯେ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ରିଜନ୍ସ ଅଫ ଦ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଅଫ ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତ ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କାହିଁକି ଅବକ୍ଷୟ ହେଲା, ମାନେ କାହିଁକି ଡାଉନ୍ ହେଲା। ତ ତମେ ତା ଭିତରେ ଡିଟେଲ ଲେଖିବ। ଯଦି ସର୍ଟ ପଢିଲା, ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଗିଭ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟସ, ଏଣ୍ଡ ଅଫ କୋଲ୍ଡ ୱାର, ଇଣ୍ଟର ରାଇଭାଲି ଏମଙ୍ଗ ଦ ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ଡ ମେମ୍ବର, ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ଯଦି ଲଙ୍ଗ ପଢିଲା ତାହେଲେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଏଲାବୋରେଟ କରିବ। ଯେମିତି କହିଲି ଏଟା ଲଙ୍ଗ ହବନି, କୋଉଟା ଟାଗୋରଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସର୍ଟ। କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲଙ୍ଗ ହେଇପାରିବନି, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସର୍ଟ ହିଁ କେବଳ ରହିବ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନଟା 4-5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଏଲାବୋରେଟ କରି ଲେଖିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ଗାନ୍ଧୀ, ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ କ'ଣ ତାକୁ ଲେଖିବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି କ'ଣ ଲେଖିବ, ମୋରାଲିଟି କ'ଣ ଲେଖିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ବ୍ରହ୍ମପୁଟି ଆଲୋଚନା ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭବନ ଯୋଉ ଘର ପାଖରେ ପଳେଇ ଆସିବେ। କୋଉଠି ଆସିବେ?
हाँ कौन कौन लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सो ଆଜ୍ଞା लॉन्ग हाँ लॉन्ग क्वेश्चन जोटा तार लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखो शॉर्ट रो शॉर्ट क्वेश्चन लिखो बुझ पालो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ गोटे एग्जांपल देले जेमती ସେଥିରେ କୋଉଟା ହବ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ତ ନା ବୁଝିପାରିଲ ଜାଣିପାରୁନ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା କଣ Discuss the reason of the emergence of non-alignment movement. ଇମର୍ଜେନ୍ସ କଣ ଓ ଇମର୍ଜେନ୍ସ ଲେଖିବ କାହିଁକି ଇମର୍ଜ କଲା କୋଲ୍ଡ ୱାର ଦିଟାକ ବାଇଲେଟରାଲ ୱାର୍ଲଡ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଲେଖିବ ଆଉ କଣ ଲେଖୁଅ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏଟା Sir, जो last question डाकिले how is Arab world? ହଁ what is our world ना how is your world what is our world not how is your what is कहला how लिखे तमे how लिख दीजिए आज्ञा सर मु सब बुझी पारनथि what is our world ହେଲା आज्ञा सर so this much for today it's 50 we can now finish and end up okay थैंक यू thank सर you thank you Thank you, sir. Class ସରିଗଲା କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା